we're joined by Shant Prakash Jatav, the leader of BJP, and Asad Abbas, a political analyst who is also known to be against the BJP. I'd like to begin with you, Shant Prakash Jatav. Now, T Raja Singh's controversial comments come barely months after former BJP spokesperson Nupur Sharma triggered this massive diplomatic backlash with her remarks on the Prophet. And as you know, there was massive international row as well. Your first thoughts? देखिए, हमारे देश में तमाम धर्म उनका सबका सम्मान है और उसके मानने वाले और जिन महापुरुषों की हम लोग आराधना करते हैं, देवताओं की, सबका सम्मान है। और इस प्रकार से किसी भी धर्म के किसी भी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि इस केस में जो पुलिस प्रशासन है वो नियमानुसार कार्रवाई करेगी। हमें सबके धर्म का सम्मान करना होगा और सब महापुरुषों का भी सम्मान करना होगा। Now, Shant Prakash Jatav, unity and diversity and all, it sounds very pretty, but how about walking the talk also? I'm going to pull in Asad Abbas right now. T Raja Singh had last week tried to disrupt a comedy show, and now he's released a 10-minute video allegedly making derogatory comments about Prophet Muhammad. What are your first thoughts? Parmeshwar ji, I have followed Thakur Raja Singh Lord for a very long time. This is the man with 75 first information reports on him. Hate speeches, serial offender, habitual offender. Also, he seemed to be, whenever there is a curfew, he's there, violate the curfew. Also, as a matter of fact, you see this man taking law and order in his hands always. Let me bring to your notice what is the stand of the BJP. Mr. Bandi Sanjay, who's the chief of Telangana BJP, has dissociated with him many a times. Also, as a matter of fact, we see Mr. G. Kishan Reddy, Minister of State Home, saying he acts autonomously on his own. Party has no stand with respect to Raja Singh. Also, we need to understand this is the man who's a serial mischief monger. He does not understand unity and diversity, but back-to-back communal issues are taken by him and he explores in his Gosh Mahal constituency. The fact of the matter is, BJP took a stand against Nupur Sharma. I think he must be immediately suspended from the party for the same reason. Also, as a matter of fact, when BJP in the letter said that this is the man or these are the people who are fringe elements, such fringe elements must not be held in a Bharatiya Janata Party which calls itself a party with a difference. Because more the bigotry, more the communal betrayal, more the hatred, it is only going to spoil the India's secular fabric of the nation. We need to understand the only way to deal with people like Raja Singh, who time and again give hate speeches and insult religious beliefs, they must be put behind bars. I'm glad that the TRS police was in action and they arrested him immediately. I think be it a Raja Singh or any man of any community, I respect Mr. Shant Prakash Jatav ji, what he said, has no right whatsoever to insult any of the respective beliefs of any religion. Right. Shant Prakash Jatav, what remains appalling then is that a defiant Raja Singh actually reacted to the FIR against him, saying it was a comedy video aimed against stand-up comedian Munawar Farooqi and it wasn't against any particular religion or community. Do you think this is a justification? Do you think this is a just justification? देखिए, किसी भी मामले में मैंने पहले कहा कि हमें हर धर्म का सम्मान करना है, हर जाति और वर्ग का सम्मान करना है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है किसी भी सूरत में किसी को बेइज्जत करने का या किसी के बारे में गलत कहने का। और लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। इसमें ठीक है, अरेस्ट किया गया है, जो भी कुछ हुआ है, घटना हुई है, उस पर कार्रवाई होगी। हमें जो लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए। और इस वक्त इतना देश के अंदर व्यवस्था है कि किसी को कहीं भी किसी रूप में बख्शा नहीं जा रहा है। किसी भी इस प्रकार की घटनाओं को कहीं भी कोई प्रोटेक्शन नहीं, सब लोगों को, सभी धर्मों को पूरा सम्मान। यही जो मोदी सरकार जो है और जो लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त देश में काम कर रहा है, उसका भी ध्येय यही है। आपको ये टी राजा सिंह को भी बताना चाहिए, सर। बट असद अब्बास, व्हाट डू यू हैव टू से टू शांत प्रकाश जाटव? You know, the fact of the matter, शांत प्रकाश जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल सही बात की है। लेकिन आपकी पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए।
ऐसे लोगों को कंटेस्ट करने के लिए आपको टिकट भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या राजा सिंह हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि राम में रमजान है और दिवाली में अली है। यह है हमारा मुल्क। ऐसे थोड़ी ना कि हम किसी भी मजहब के बारे में कुछ भी कह देंगे। मैं दरखास्त करता हूं आपसे, आप बहुत ही एक बुजुर्ग आदमी हैं और आपको बहुत ही माशाल्लाह शानदार इल्म रखते हैं, इस बात का ज्ञानी आदमी है। मेरी गुजारिश आपसे है कि आप ऐसे लोगों को पार्टी में बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिए। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, विश्वास कहां है अगर राजा सिंह और नुपुर शर्मा जैसे लोग रहते हैं जो एक किसी और धर्म या जाति के खिलाफ बात करते हैं? उनको सस्पेंड ही नहीं, पार्टी से दरखास्त करके निकाल देना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो किसी और का मजाक उड़ाते हैं या किसी और धर्म जाति के खिलाफ बात करते हैं, इनको आपको एमएलए, एमपी या कोई भी काउंसिलर टिकट भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि आई ट्रूली बिलीव, परमेश्वर जी, द फैक्ट ऑफ द मैटर, the Bharatiya Janata Party today needs to understand that they cannot give out election tickets to any of these people who make communally hate speeches. They are the reason why today we see such tense situations across India. This is not the land. Allama Iqbal very articulately and beautifully said, mazhab nahi sikhata aapas mein bair rakhna. It is these politicians who act on their own autonomously and do nothing about it. The simple question I'd like to ask the BJP leader on the panel, Shan Prakash ji, is when the party dissociates themselves, Bandi Sanjay, the TN, the Telangana chief of BJP, dissociated from him. Also, G. Kishan Reddy, Minister of State Home, dissociated with him. Then when BJP does not understand this man's ideology, why is he still given the party to contest? Why? Only because he's able to win? Only because he has muscle power, money power? I think that should not be the reason. So, ऐसे लोगों को आप टिकट क्यों देते हैं शांत प्रकाश जी? ऐसे लोगों को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। मेरा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम उसका पालन करते हैं और ये जो व्यवस्था है वो सबको लेकर के बनी है। किसी भी सूरत में कोई भी भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई भी किसी के साथ में कुछ गलत बोले और उसको जो है व्यवस्था में रहने दिया जाए। पीछे भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उन सब के खिलाफ भी पार्टी की तरफ से नियमानुसार कार्रवाई की गई है और इस विषय पर भी अनुशासन समिति और पूरा एक सिस्टम है, पार्टी उसको देखेगी और उसके आधार पर ही निर्णय लेगी और वो निर्णय जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होगा और हर हालत में जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना ही हमारा ध्येय है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कृत संकल्प है। किसी सूरत में किसी का भी अपमान करने का या अपमान करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। Right, gentlemen, thank you so much for providing your views.